Second, I will also talk about some common names. And is there a lot of noise from my side? Tell me. Kenza, Mansi, anyone? No, sir. No, sir. Okay, just a second. Just take a minute. Yeah, okay. I will also discuss a few common names. Then in this both part I will also discuss about the ortho, meta and para concept. बहुत सारे लोगों को भी इसमें दिक्कत होती है. And thirdly, I will discuss the inductive effect, resonance effect, and hyperconjugation. Slightly hyperconjugation because अगर आपने 11th क्लास में hyperconjugation नहीं पढ़ा है, then it is fine. आप उसको छोड़ दीजिएगा. Most of the questions जो hyperconjugations जिनका real reason होता है उनको आप inductive effect से भी derive कर सकते हैं. Okay, and then also mesomeric effect. Mesomeric effect में आपको पता चलेगा what is electron withdrawing group, what is electron donating group. Okay, so these are the things that I will be discussing mainly today. And fourth part में आपके पास there are some rules ना, जैसे Markovnikov's rule है, anti-Markovnikov rule है, then you have the Setzeff rule. I will be discussing these rules also. Okay, now first of all, also one more thing is the acidic nature and basic nature. ठीक है, तो एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में भी I will discuss. So we will have 5 things in our hand. Now I hope all of you know the method of nomenclature that I teach. It is what? It is SPUF. SPUF. What is SPUF? Substituent, parent, unsaturation and functional group. Now we start with identification this way. आप कैसे identify करना start करेंगे? You are going to identify in this order. You will identify functional group first, then the unsaturation, then the parent, and then the substituent. And you will write the name in this order. We first of all write the substituent, then the parent, then the unsaturation, and then the functional group. Okay. Those who are coming late, please come on time. 1 घंटे की क्लास है, उसमें भी अगर आप लेट आएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है? Please be on time. Before time आइए. Okay. Please come before time. Those who are coming late, 10 minutes late, it is not. हम क्या बताएं? ठीक है? कोई और लेट नहीं होगा आपसे. Please be on time. I was talking about nomenclature. In nomenclature, we use a method which is known as SPUF: substituent, parent, unsaturation, and functional group. We start with the identification of functional group, then move forward and identify the unsaturation, then we move forward and identify the parent, then we move forward and identify the substituent. This is how we are going to identify things, and we are going to write the name in this order. The writing of name goes in this order. Okay? For example, if I have something like this, double bond O, OH, and double bond O. Okay. Now, first of all, here you have to identify what are the functional groups. So here you have 2 different functional groups. आपको बोला जाएगा. You have carboxylic acid and ketone also. Now, out of carboxylic acid and ketone, which has higher priority? Tell me. Acid or ketone, which has higher priority? Acid has higher priority. So this is my functional group now. I don't worry about, now ketone is not my functional group. You have only one functional group in one compound as per IUPAC nomenclature. Okay, if you're talking about IUPAC nomenclature, there will be only one functional group per structure. There will be only one functional group. So what is the functional group here? Functional group is going to be oic acid. Now, unsaturation. Is there any carbon-carbon double bond or triple bond? No. So we will write it is what? AN. Absence of double bond is written as AN. Absence of double bond is written as AN. Then you have the parent. Now, parent should contain the functional group. If not, then the unsaturation. If not, then the substituent. So, पहले आप यहाँ पे you will start the parent with this carbon atom. Then you have first, second, third, and fourth. Always remember, you have to start the nomenclature. You have to start numbering from which carbon atom? From the functional group carbon atom. The carbon atom which has the functional group. Okay, the carbon atom which has the functional group. If there is no functional group, then you will look at the unsaturation.
So the carbon atom which is nearest to the unsaturation, that will be the first carbon atom. Now, here we have the parent, that is what 1, 2, 3, 4, that is bute. And then we have the substituent. Now, after the identification of puff, parent, unsaturation, and functional group, whatever remains is the substituent. So here we have the substituent, that is oxygen atom, the ketonic group. That can be written as what? Oxo. Oxo is in the third carbon, so this will be 3-oxo. And the name is going to be 3-oxo butanoic acid. 3-oxo butanoic acid. But for example, if this structure did not have the carboxylic acid group, rather it had, let us suppose, Br here, and you had the double bond oxygen here. Now, in this case, the numbering should start from the functional group, the carbon atom that is nearest to the functional group. So I will start with 1, 2, 3, and 4. I will not start with Br because Br is a substituent. Functional group is ON, unsaturation is An, parent is bute, and the substituent is bromo. So this is now 4-bromo butane. ON is in the second carbon, 2-on. 4-bromo butane, 2-on. Now, moving on to the next thing, that is some groups that you have to identify. There are some common names that you have to identify. एक चीज होती है asset. Asset का concept, it is very important. You have to know what is asset. There is no other. मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है. Asset आपको जानना ही जानना. Okay, you have to know what is asset. What is asset? It is CH3 C double bond O. What is asset? It is CH3 C double bond O. अब इससे आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी. Okay, you can get many things from here. If you have acetone, इससे आप सबसे आसानी से how can you make ketone? You will add CH3. क्या बन गया? कीटोन बन गया. This is acetone. इससे आपको बनाना है, मान लीजिए, aldehyde. You have to make aldehyde from here. Then what you will add? You will add here hydrogen. What are you going to add? You will add here. Now you will become what? Acetaldehyde. इससे आपको बनाना है, let us suppose, acid, carboxylic acid, acetic acid. Acetic acid means you have to add OH. आपने यहाँ पे डाल दिया OH. अब क्या बन गया ये? Acetic acid. आपको बनाना है एसिटोफेनॉल. तो आपने लिया CH3 C double bond O और इसमें आपने डाल दिया फिनाइल ग्रुप. That is the benzene ring. This is now acetophenol. So this acid is very important. Acid. Acid में CH3 C double bond है, and then you have to add something. अगर आप इस तरह से याद कर रखेंगे ना, आप मान लीजिए आपने देख लिया, let us suppose you have seen acetone, then you will say that okay, acetone has 3 carbon atoms. Then you will see acetaldehyde. तो आप पागल हो जाइएगा, इसमें से 2 कार्बन आटम ही होता है. Then you will say okay fine, maybe 2 carbon atoms होता होगा. फिर you will see acetic acid, you will say yes, there are 2 carbon atoms. Acid का मतलब 2 carbon atom होता होगा. Acid का मतलब 2 carbon. Then you see acetophenone. Then you saw what? Acetophenone. And acetophenone में तो कितने कार्बन है? 6 यहाँ, 2 यहाँ, 8 कार्बन आटम हो गए acetophenone. Now you will say oh my god, what is this? केमिस्ट्री में तो कुछ ये ही नहीं है, कुछ रूल ही नहीं है, सब चीज एक्सेप्शन ही है, सब कुछ अलग है. नो, CH3CO is common. This is acid. This is acid. Now when you have to make acetone, that means you have to make what? You just have to convert the acid into ketone. Add CH3 on the C double bond O. Acetaldehyde, you have to convert acid into aldehyde, add a hydrogen. Acetic acid, you have to convert acid into a carboxylic acid, add OH, you will get the carboxylic acid. Acetophenone, you have to convert acid into what? Into acetophenone. आप वहां पे बस phenyl group लगा दीजिए. That is the benzene ring attached to the carbon double bond. Okay, so please remember acid and these structure: acetone, acetaldehyde, acetic acid, and acetophenone. बहुत सारे लोगों को आता होगा, so they may be feeling कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, but जिन लोगों को नहीं आता, I hope they understand the importance of these structures. See, next you have a few things. In ethers also you can have this type of name. CH3 and CH3. The IUPAC name for this will be methoxymethane. But the common name is what? It is dimethyl ether. Yeah, dimethyl ether. Also, you can have a common name such as this also. C double bond O, CH3 and CH3. This is dimethyl ketone. If you have
double bond O, and you have ethyl group here, you have methyl group here. So it will be ethyl methyl. You will have ethyl methyl ketone. Okay, you'll have ethyl methyl ketone. Chali. Also, one more thing that you have to always understand is primary, secondary, and tertiary. So most of you, I hope you all do. If you have OH here, then for example, if I talk about 1, 2, 3, then here the first carbon is what? Primary, third carbon is primary, but second carbon is secondary. तो क्या बोला जाए? Primary है ये वाला या फिर secondary है? So you will always have to look at the alpha carbon. The carbon that is what? The carbon that is containing the functionality. Functionality is in the OH. Functionality कहाँ पे? OH में. So this carbon atom. Now this carbon atom is attached to only one carbon. That is why it will be 1 degree. Is Fatima, you saying something? I was saying primary. हाँ, primary. अब यहाँ पे आप functionality कहाँ पे देखेंगे? You will see the functionality here, and this is 2 degree carbon atom. This is 2 degree carbon atom. Now similarly, you have this carbon atom in 1 degree, 2 degree, and you have 1 degree, 2 degree in amines also. Amines can be of different types. You have CH3, NH2. Now this nitrogen is attached with one carbon atom, 1 degree only. When you have nitrogen that is attached with CH3, another CH3 and a hydrogen atom, then this nitrogen is what it is? 2 degree. Now nitrogen can be attached with 3 carbon atoms, and this will be 3 degree. It can also be attached with 4 carbon atoms, and that is known as quaternary ammonia salt, ammonium salt, if ammonium ion. If you don't have any counter anion, nitrogen, CH3, CH3, and CH3. This will have a positive charge, and this is quaternary ammonium ion. This is quaternary ammonium ion. Then you have substitutions in different types of benzene ring. When you have benzene ring like this, what is this position? Tell me, guys. Ortho, meta, या para? What is this position? Ortho, meta, or para? Yes, Fatima. कौन सा है ये? Ortho. Ortho. This position is ortho. पागल हैं आप लोग. जाके नाली में डूब जाइए, 1 महीना बचा है. Ortho position. Ortho position is a relative position. It will be only possible if you have. कौन बताएगा? कौन बताएगा? If you have already one group, एक ग्रुप यहाँ पे लगा रहना चाहिए, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं किसी को ऑर्थो मेटा पैरा. रिलेटिव है. रिलेटिव का मतलब दूसरे से रिलेशन है इसका, दूसरा कुछ रहना चाहिए यहाँ पे. इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी. फहद, हिश्मा, फातिमा, 3 लोग को हमने सुना था ऑर्थो बोलते हुए. यस और नो? हाँ फहद, याद रहेगा? Yes, sir. देखिए ध्यान से देखिए, हम अच्छे से समझा देते हैं अभी, ठीक है? डांटने वाली बात नहीं है, मैं ऐसी मजाक में बोले, मत डूब जाइएगा कहीं पे जाके आप लोग, ठीक है? सुनिए, ध्यान सुनिए. सी, if you have some group attached here, then these positions are ortho. लेकिन अगर if the group is attached here, then this position is ortho. तो आपको समझ में आ रहा है ना? ऑर्थो मेटा पैरा रिलेटिव है, एब्सोल्यूट पोजीशंस नहीं है बेंजीन रिंग में. यस और नो? प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू. एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क समझ में आ रहा है? इफ एनीवन हैज सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीस वर्ड्स रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, प्लीज लेट मी नो. All of you understand relative and absolute? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, very good. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग. When you have a group already attached, then you have these 2 positions as ortho, these 2 positions as meta, and this 1 position as para. And I have always said, आपको क्या कैसे डिफाइन करना ऑर्थो मेटा पैरा? ऑर्थो कब होता है? When you have 0 carbon in between, है ना? अगर इस ग्रुप में और यहाँ पे अगर कुछ ग्रुप लगा रहेगा तो इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है? 0 कार्बन इन बिटवीन. एंड व्हाट इज मेटा? You have 1 carbon in between, है ना? If you have, let us suppose you have some group, and also remember, ortho meta para is only applicable when you have 2 substituent groups. If you have 3 substituent groups, then you will not name it as ortho meta and para. It is only applicable when you have 2 substituent. ठीक है? If you have meta group यहाँ पे, let us suppose you have some CH3 or something added here. It has 1 carbon atom in between, right? इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कितने एटम है? 2.
जैसे इस ग्रुप और इस ग्रुप में कितने हैं, एक कार्बन एटम है, दैट इज मेटा, एंड यू विल हैव पैरा व्हेन यू हैव लेट अस सपोज 2 कार्बन एटम्स इन बिटवीन। आई होप अब आप लोग को ध्यान रहेगा व्हाट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा 2 carbon atom in between what, in between the groups, ठीक है, 2 carbon atom in between the groups. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, चलिए, there are few more things जो आपको पता रहना चाहिए कि क्या होते हैं। जैसे आपको अगर ROH बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, ROH को क्या बोलते हैं, टेल मी, क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल बोलते हैं ना भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, दिस इज अल्कोहल राइट। इफ यू हैव RX then this is what is this, RX, ओहो कोई तो बताते, जल्दी बता दीजिए, व्हाट इज RX, Alkyl halide. अल्काइल हैलाइड हैलो एल्केन है ना, अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन। उसी तरह से अगर हम लिख दें RCOOH तो ये क्या हो जाएगा बताइए, RCOH विल बी, जनरल नाम क्या होगा इसका, टेल मी गाइस, ऐसे चुप न मत बैठिए ना, ठीक है, थोड़ा डांट सुन लीजिएगा, गलत हुआ तो, RCOH तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन टेल मी, सारा आप बताएं, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, RC डबल बॉन्ड ONH2, Ketone. नहीं, कीटोन में दोनों तरफ R होता है, एनीवन, Amide. अमाइन नहीं, अमाइन में आपके पास R सीधा बॉन्डेड होगा NH2 के साथ, दिस इज अमाइड। Sir, I said that one. अच्छा अमाइड बोला था आपने, सॉरी नहीं बैड। व्हाट इज दिस, इधर आपके पास R R लगा रहे, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में, ध्यान रखिएगा, एनहाइड्राइड के साथ बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ओके, इट एक्ट्स एज अ रिएजेंट इन मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब आपको एस्पिरिन बनाना है, या फिर आपको इफ यू हैव टू कंट्रोल दी, इफ यू हैव टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, दैट इज डन बाय एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, एनहाइड्राइड हो गया, एंड देन यू हैव इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, RC डबल बॉन्ड OR, कोई भी बताइए जल्दी, नो आइडिया, दिस इज ईस्टर, ईस्टर कहते हैं ना इसको, दिस इज ईस्टर, C डबल बॉन्ड O एंड देन यू हैव अनदर O व्हिच इज बॉन्डेड विद R। एक और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज R, दैट इज बॉन्डेड विद कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम हैज अ डबल बॉन्ड N, ठीक है, this carbon atom has double bond N and this N can have some R group या फिर H group, कुछ भी हो सकता है इसके पास, and this carbon atom will can also have R or H anything, ठीक है। तो अगर आपके पास C डबल बॉन्ड N आ गया, इसको बोलते हैं इमाइन, क्या बोलते हैं इसको, इमाइन, ये भी याद रखिएगा, याद रहेंगी ये चीजें, ये सुनो प्लीज टेल मी गाइस, Yes, sir. ओके, ठीक है, ये तो जनरल था आपका नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, ठीक है, जनरल आपका क्या था, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इफेक्ट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इफेक्ट्स। मेनली आपके पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, देन यू हैव इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर, एंड व्हाट एल्स डू यू हैव, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, ओके। सो इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई, ठीक है, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई increases the electron density and this decreases the
अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज करता है? इन अल्काइल चेन, इन कार्बन चेन, and minus I decreases electron density in carbon chain. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और क्या करता है? डिक्रीज करता है. नाउ प्लस आई इफेक्ट आपको मेनली कहाँ पे मिलेगा? प्लस आई इफेक्ट आपको दिस CH3 आपके पास क्या देगा? दिस इज प्लस आई इफेक्ट. दिस विल गिव ऑल द अल्काइल ग्रुप्स आर गोइंग टू गिव यू प्लस आई इफेक्ट. ओके, ऑल द अल्काइल ग्रुप्स. देन इफ यू हैव सम O नेगेटिव टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी आपको क्या देगा? प्लस आई देगा. माइनस आई इज गिवन बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. माइनस आई में एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ different types of carbons. Now, if you have sp3 hybridized carbon atom, that will have the least electronegativity, followed by sp2 and followed by sp carbon atom. sp carbon atom की सबसे ज्यादा electronegativity होती है. Okay, so for example अगर हम बात करें benzene ring, ध्यान से सुनिएगा. I'm talking about what? Benzene ring. Benzene ring जो है ना, it has minus I effect. Why it has minus I effect? Because अगर benzene ring कहीं पे भी लगा रहेगा, then it has what? All the atoms are sp2 and sp2 has higher electronegativity. तो ये नॉर्मल कार्बन चेन से अगर आप बात करें, नॉर्मल कार्बन से इसका क्या होगा? इट विल बी हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज व्हाई इट विल बी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. बेंजीन का क्या होता है? बेंजीन हैज अ माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, इट हैज अ माइनस आई इफेक्ट. एक एग्जांपल, एक और चीज आप समझ लीजिए, द एसिडिक कैरेक्टर एंड द बेसिक कैरेक्टर. ओके, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एसिड, you will have Ha. Ha will dissociate into H plus A negative. ठीक है. Now, acidic strength is directly proportional to stability of A negative. और A negative को क्या बोलते हैं? It is also known as AKA conjugate base. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट बेस. एसिड का पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस. इक्विलिब्रियम 11 चैप्टर का है. अगर कॉन्जुगेट बेस समझ में नहीं आ रहा है, देन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए नेगेटिव. हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, जो भी बचा वो आप पे ए नेगेटिव है. नाउ लेट अस सपोज आई हैव 3 डिफरेंट एसिड्स. एक में है आपके पास CH3 अटैच विथ CH2 दैट इज अटैच विथ कार्बन डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन. बी में है आपके पास, लेट अस सपोज यू हैव आयोडीन that is attached with CH2 that is attached with C double bond O and H. Then you have C, that is you have chlorine attached with CH2 that is attached with COOH. Then D में है आपके पास fluorine, CH2 attached with C double bond O and H. Okay. Now इन सब में आपको बताना है which is most acidic, या फिर आपको कंपेयर करना है ABCD की acidic strength. You have to compare the acidic strength of ABCD. Now what you need to do, you need to get the conjugate base. आप हाइड्रोजन हटाइए. ठीक है, अगर इन सब में से अगर हम हाइड्रोजन हटा देंगे ना, सेकंड, I will remove the hydrogens from here. I will get COO negative, OO negative, OO negative and OO negative. अब बताइए इसमें से CH3 is going to give the electrons, that is why it will increase the charge. क्यों क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. Iodine is going to pull the electrons, that is why charge will decrease. Cl will also pull the electron, that is why charge will decrease, and fluorine will also pull the electron, that is why charge will decrease. लेकिन सबसे ज्यादा चार्ज कौन डिक्रीज करेगा यहाँ पे? Which is most electronegative? Tell me. Which is most electronegative? कार्बन, आयोडीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है ना. फ्लोरीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इफेक्टिवली. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आपका इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा. एंड एज द चार्ज डिक्रीजेस, आई कैन से व्हाट? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. यस और नो, प्लीज टेल मी. ये बात पता है आप लोग को? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. ठीक है, अगर चार्ज एक जगह बहुत ज्यादा हुआ ना, चार्ज डेंसिटी याद रखिएगा, नॉट चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज, because this negative charge जो है ना, this negative charge will be there in the compound no matter you have added chlorine, iodine or
any methyl group or ethyl group. This negative charge, one negative charge is present in all of them. So charge is same, but the charge density is increasing and decreasing. In this case, when you have fluorine, the charge is small. It is very the charge density is less because charge क्या हो रहा है, travel कर रहा है पूरा यहाँ से यहाँ compound तक. But if you see the CS3 is also giving the electrons, so charge concentrated है यहाँ. So charge density is higher in the first case, and in the fluorine's case, charge density is smaller, and that is why the stability is higher. So सबसे ज़्यादा stable कौन सा हो जाएगा? D. That is why D is most acidic, followed by C, followed by B, and then followed by A. Is this clear? Yes or no? Please tell me, all of you. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Anyone has any doubt in this? How to get the acidic strength by using different types of effect? जी बताएं, anything? यहाँ पे नहीं है किसी को डाउट? No, sir. Okay. No. ठीक है, तो प्लस आई माइनस आई में आपके लिए यहाँ पे है. एंड देन वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बोकैटायंस. ठीक है, कार्बोकैटायंस. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स ऑन दी, आप ये कह सकते हैं, द डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर कितने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो द इंपॉर्टेंट कार्बोकैटायंस ना, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी अगेन चार्ज डेंसिटी. ठीक है, हाँ प्लीज सी. कार्बोकैटायंस में देखिए, you can have a few types of carbocation. You can have CS3 positive, or you can have CS3 CH2 positive, or you can have CS3 CH2, यहाँ पे positive charge, 2 carbon atom, or you can have 3 carbon atom and positive charge. अगर आपके पास इस तरह का comparison हुआ, then in this case, what is going to be most stable? This is going to be most stable because it is having more number of CS3, which is going to give the electrons. And दूसरा case आ सकता है आपके पास when you have, this is very stable by the way, okay? यहाँ पे you have 3 alpha hydrogens are 9. It is almost as stable as a toluene का कार्बोकैटायन. ठीक है, इस केस को हम दे देंगे. But if you have 0 degree, 1 degree, 2 degree, and 3 degree में comparison, तो 3 degree is going to be the most stable. Then you have allyl कार्बोकैटायन. ठीक है, allyl कार्बोकैटायन कौन से केस में बनेगा? आपके पास if you have bromine here, यहाँ पे क्या बन जाएगा? allyl कार्बोकैटायन. This is also very stable. This is also stable. ठीक है, and if you have इस तरह वाले bromides, it is going to give you what? It is going to give you SN1 because it has stable carbocation. Now then the some stability comes because of the benzene ring. CH2 positive. Now this carbon atom, it has a resonating structure. ये जो positive charge है ये इधर चला जाएगा, and then benzene is going to be giving some resonance structure. ठीक है, then you have इस benzene ring को pH लिखते हैं, तो this pH, and then you have carbon atom, and then one more pH, the positive charge. Now since this has 2 pH, pH is what? pH is equal to C6H5. तो यहाँ पे आपके पास 2 phenyl group है, there will be more number of resonating structure. Then you have pH, carbon, pH, and another pH, positive charge here. So यहाँ पे इसकी stability सबसे ज्यादा, and then इसकी stability. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है, phenyl की stability clear है. Now moving on, mesomeric effect. तो plus M and minus M. Plus M is electron donating, effect via pi bond. ठीक है, प्लस आई में क्या होता है? वाया सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे प्लस एम में वाया पाई बॉन्ड. माइनस एम इलेक्ट्रॉन withdrawing effect,
via pi bond. Okay, देखिए whenever you have a group, आप सबसे पहले उसमें क्या चेक कीजिएगा, you will check the you will check the minus m effect, है ना, and most of the times it will be on the benzene ring में ही आपको प्लस m और माइनस m देखना पड़ेगा, ठीक है, both प्लस m and माइनस m, एक और पार्ट हम दिखा देते हैं, both plus m and minus m shows its effect on ortho and para positions, ठीक है, ortho and para position. Plus m increases electrons on ortho and para, therefore activating it for electrophilic aromatic substitution reaction, bromination, sulfonation, nitration, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, उन सब में क्या होता है, it is activating का मतलब क्या, if you have plus m group then it will be more reactive than benzene, that is more reactive than benzene. Minus m decreases electron density on ortho and para, therefore deactivating it for electrophilic aromatic substitution, that is less reactive than benzene, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, ये तो रिएक्टिविटी होगी, अगर आपके पास प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, तो दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस इफ यू हैव अ इलेक्ट्रोफाइल, जो रिएजेंट है, then this electrophile will be attached on ortho or para product, ortho or para position, plus m group लगा हुआ है यहाँ पे, it will be attached on ortho and it will be attached on the para, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, प्लस एम वाले ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, we call them ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. Now you have one more thing that is known as minus m. तो minus m में अगर what is happening minus m में, this is getting delta positive, this is getting delta positive and this is getting delta positive, correct? Yes or no, please tell me guys, all of you. minus m का Yes. केस देखिए, ठीक है. Now if there is electrophile, इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, टेल मी, विच पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन या फिर मेटा पोजीशन, कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वेयर डू यू हैव द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइए तो कहां पे है, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑर्थो पे पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, राइट, पॉजिटिव का मतलब तो नहीं है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, फातिमा बताइए कहां पे है, मेटा मेटा पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, दैट इज व्हाई यू गेट व्हाट, माइनस एम आर मेटा सब्स्टिट्यूटिंग. Is this clear now? Yes or no? Please tell me, all of you. यस सर। ठीक है. Now, how to identify plus m and minus m group? दो तरीके हैं, या तो आप इसको याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है, सारे ग्रुप से क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए प्लस एम एंड माइनस एम, या फिर आप क्या कीजिए, या फिर आप समझिए, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट माइनस एम, अगर आपको कुछ भी ग्रुप मिला, आप क्या देखिएगा वहां पे, माइनस एम देखिएगा. माइनस एम कैसे मिलेगा आपको, की एटम अटैच्ड टू, कोई कंप्लीट करना चाहेगा, किसी को याद है अभी ये सेंटेंस माइनस एम के लिए, इज देयर एनीवन, किसी को याद हो, की एटम अटैच्ड टू, नहीं याद है किसी को, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, via multiple bond. What is key atom?
atom directly attached to benzene ring is called key atom. ठीक है, या तो key atom attached to more electronegative element via multiple bond और key atom has positive charge. ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तभी वहां पे क्या हो जाएगा, it will be plus m. Tell me what is the key atom here? Benzaldehyde में what is the key atom? CHO. CHO key atom नहीं है ना, atom होगा ना, अब तो ग्रुप बता दे रही है. What is the key atom? Which atom is directly attached with the Carbon. कार्बन है. ठीक है, अब बताइए कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. Yes, sir. है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस एम या माइनस एम. CHO is minus m, deactivating and meta directing. बात समझ में आ गई सबको? ये सुनो प्लीज मी, इज दिस क्लियर? है ना, बताएं. एक और देखिए, Yes. इफ यू हैव एसिटोफेनॉन, बताइए की एटम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द की एटम इन द सेकंड स्ट्रक्चर? बोलिए ना, आप लोग बोलना क्यों बंद कर देते हैं? जिसको आ रहा है वो बताए. Carbon. कार्बन. इज इट अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया डबल बॉन्ड? Yes. है ना, माइनस एम. कार्बोक्सिलिक एसिड, Carbon is the key atom. हाँ, इज इट अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया डबल बॉन्ड? Yes. यस. इसमें बताइए विच इज द की एटम? थर्ड वाले में Carbon. Carbon. is it attached with more electronegative element via double bond? No. No, it is not attached. ठीक है, तो ये माइनस एम नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट बी माइनस एम. अगर कार्बन लगा हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नाउ प्लस एम, अगर कार्बन लगा हुआ है तो. ठीक है, नाउ लेट अस सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस OCH3. ये बताइए व्हाट इज द की एटम? Oxygen. Oxygen. Is it attached with more electronegative element via multiple bond? No. तो फिर क्या हो जाएगा, this will be now plus m. Plus M. अगर इसके पास देखिए लोन पेयर अगर हुआ तो इट विल बी व्हाट, प्लस m. बताइए प्लस m और माइनस m. Plus M. This one plus m और माइनस m. Plus M. प्लस m. ओके, ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो मेनली मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है. एक आपके पास बहुत ही स्पेशल केस है, दैट इज फॉर हैलोजेंस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. हैलोजेंस में क्या होता है, यू हैव माइनस आई एंड यू हैव प्लस m. इन दिस केस एंड ओनली इन हैलोजेंस, वैसे तो आप अगर देखिएगा
व्हेन यू हैव अ नाइट्रोजन अटैच, तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस आई भी होता है. वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज गोइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड. बट ये पाई बॉन्ड से क्या होता है, प्लस एम होता है. इन जनरल सारे केसेस में क्या होगा, इन जनरल इन ऑल ऑफ द केसेस the minus sorry in all of the cases mesomeric effect is the dominant effect. Mesomeric effect क्या होता है, it is dominant. But in halogens, because of its very small size, minus I effect is dominant. ठीक है, inductive effect is dominant. That is why क्या होता है, inductive effect is dominant, and that is why minus I is dominant. Minus I dominant है, that is why it becomes what, electron withdrawing group. It becomes electron withdrawing group. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, it becomes what, electron withdrawing group. That is why it is what, deactivating. लेकिन सिंस इसके पास प्लस एम है, प्लस एम की वजह से क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे डेल्टा नेगेटिव. ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड सिंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इट इज व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो हमने लिखाया हुआ भी है आप लोग का हैलोअल्केन हैलोरीन में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास दो चीजें होती है, एक तो होता है रिएक्टिविटी, कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा बेंजीन के बनिस्बत. रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट. एंड दूसरा होता है कि प्रोडक्ट कौन बनाएगा, ऑर्थो पे बनेगा, पैरा पे बनेगा, ऑर्थो पैरा पे बनेगा, या फिर मेटा पे बनेगा. तो जो आपके पास ओरिएंटेशन होता है ना, वेयर दी ग्रुप्स आर गोइंग टू अटैच, दैट इज डिसाइडेड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट. दो चीज हैं, ओरिएंटेशन and reactivity. Reactivity is controlled by inductive effect. Orientation is controlled by mesomeric effect. So that is why halogens एक ऐसा, अगर आपके पास you have chlorobenzene, then chlorobenzene की reactivity जो होगी ना, if I compare the reactivity, it will be less reactive than benzene. Benzene ज्यादा अच्छे से electrophilic aromatic substitution देगा, but chlorine is going to be what? It is going to be still ortho and para directing. Is this clear? Yes or no? Please tell me all of you. Halogen वाला case. हाँ जी बताएं. Anyone has any doubt? Please tell me yes or no. Sir, can you repeat the chlorine one? Chlorine one, ठीक है. देखिए, when you have halogens ना, halogen में कौन कौन से आ सकते हैं, you can have fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now all of these are going to be minus I because they are more electronegative element than normal carbon atoms. These are more electronegative element, and because of its small size, minus I is dominant than plus M. Generally क्या होता है, it is going to be इलेक्ट्रॉन, ये पाई से क्या देगा, पाई से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेगा, लेकिन सिग्मा से ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से घटा देगा. ओके, सिंस माइनस आई इज मोर डोमिनेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल बिकम डीएक्टिवेटिंग. लेकिन प्लस एम की वजह से क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा, नॉट मेटा डायरेक्टिंग. ओके सामिया, Yes, sir. अब बताइए क्या लग रहा है आपको, सिंस इट इज माइनस आई और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा होना चाहिए, आपको ये लग रहा है क्या, मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए? यस सामिया, टेल मी. Yes, sir. मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए. क्यों? माइनस आई से क्या होगा बताइए, माइनस आई से क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग होगा, है ना. माइनस आई से डीएक्टिवेटिंग होगा, लेकिन किसी एक कार्बन किसी एक पोजीशन पे डीएक्टिवेटिंग होगा या फिर पूरे बेंजीन रिंग में डीएक्टिवेटिंग होगा, पता है, माइनस आई की वजह से. तो Sir, क्लोरीन विल the whole. होल, है ना, यानी कि सब में क्या हो रहा है, सब सारे कार्बन एटम्स में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जा रहे हैं, करेक्ट है. Yes. ये सामने, लेकिन प्लस एम की वजह से, प्लस एम भी तो हो रहा है ना, भले ही उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन प्लस एम हो रहा है. सारे कार्बन से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, लेकिन प्लस एम ने ऑर्थो एंड पैरा पे थोड़ी सी इंक्रीज कर दी. तो रिलेटिवली स्पीकिंग अब सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, रिलेटिवली स्पीकिंग. हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेंजीन से ज्यादा होगा, लेकिन हम ये रिलेटिवली बोल रहे हैं कि दिस मेटा पोजीशन से तो आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, है ना, तो मेटा पोजीशन को दिया नहीं आपने, ऑर्थो से आपने लिया, लेकिन थोड़ा सा दे भी दिया वापस. सो दिस ऑर्थो and para will be more electronegative, sorry, they will be having more electron density and that is why they are more reactive. तो ortho and para product बनेगा. आप समझ में आया आपको? Yes, sir. माइनस आई से सारे कार्बन से ले रहे हैं और प्लस एम से हम ऑर्थो एंड पैरा में थोड़ा थोड़ा और दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. ठीक है, आप अगर जाइएगा हैलोअल्केन हैलोरीन में, उसमें हमने एक
सवाल लिखाया हुआ है और उसका जवाब भी, ठीक है। सो यू इवन इन एनसीईआरटी यू हैव दिस क्वेश्चन, आई थिंक एग्जाम्पल में ये सवाल है, एंड इन दैट यू हैव दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू हैव टू राइट इफ दिस क्वेश्चन कम्स, that the reactivity is controlled by inductive effect, but the orientation is controlled by mesomeric effect. That is why even though halogens are deactivating in nature, they give ortho and para products. ठीक है, even though they are deactivating in nature, they give ortho and para products. This is all about the mesomeric effect. Last हम लोग को जो पढ़ना है, that is about the different rules. कुछ rules हैं आपके पास. You have Markovnikov's rule. You have anti-Markovnikov's rule. Anti-Markovnikov's rule, it is also known as what? बताएं जरा. How many of you know the name? Anti-Markovnikov's rule is also known as peroxide effect, or it is known as Kharash effect. ठीक है, तीन नाम है इसके. And then you have the Zaitsev rule or the Sedzev rule. ठीक है, ये तीन रूल्स हैं आपके पास जो कि आपको याद रखना है. In Markovnikov's rule, what happens? It says that if you have something like HBr, then Br attaches on that carbon. HBr या फिर आपके पास कुछ भी अनसिमेट्रिक लो, HBr हो, चाहे आपके पास HCl हो, चाहे आपके पास HOH हो, वाटर मॉलिक्यूल हो, ठीक है. तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना, इसको ऐसे लिख लीजिएगा. नेगेटिव पार्ट जो है इट अटैचेस. नेगेटिव क्या है यहाँ पे? Br नेगेटिव, H में Cl नेगेटिव है, HOH में OH नेगेटिव है. इट अटैचेस ऑन दैट कार्बन which has, बताइए, dash number of hydrogens, more या less? Less number of hydrogens. ठीक है. एंटी मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये सिर्फ HBr के लिए, ओनली फॉर HBr. सबसे पहले ये ओनली फॉर HBr. इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, Br attaches on that carbon which has more number of hydrogen. Sedzev rule का सिंपल है, more substituted alkene is the major product. ठीक है. तो आपको कहीं पे भी अगर एल्कीन बनाना है और आपको एल्कीन में दो मिल रहा है, मेन जो यहाँ पे एग्जांपल, दैट इज डिहाइड्रोहालोजिनेशन. फॉर एग्जांपल यू हैव, let us suppose you have Br like this and you have alcoholic KOH. Now you can have these two, so this will be major because it has two. The double bond के अराउंड कितने कार्बन, कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स हैं, कार्बन्स नहीं देखना, ग्रुप देखना. कितना आपके पास? एक ग्रुप और यहाँ पे दो ग्रुप. बट इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ आपके पास एक ग्रुप है. ठीक है, यू हैव ओनली वन ग्रुप हियर. सिमिलरली सेम थिंग्स हैपन व्हेन यू हैव OH, और हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, H+ and heat, you get this and you will get double bond this. तो ये आपका मेजर होगा. तीनों रूल समझ में आ गया सबको? yes or no, please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt here? Please tell me now. कुछ पूछना है आपको? इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है आपको? इन जनरल सारे चैप्टर में सेम चीज हो रहा है. हम आपको बारहा कह रहे हैं, नेमिंग आप लोग प्लीज ठीक से करके जाइएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंस कोई देता नहीं है नेमिंग को, कोई बोलता नहीं है आप लोग करने के लिए, लेकिन प्लीज याद रखिए नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर उन्होंने बोल दिया ना नेम द कंपाउंड, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा. उन्होंने बोल दिया ना दिस कंपाउंड रिएक्ट्स दिस कंपाउंड नेम के साथ, तो फिर आपको आना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. ओके, सो प्लीज बी वेरी प्रोफिशिएंट इन नेमिंग. बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को दोस्त बना लीजिए अपना. बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर किसी को अभी तक CH3 CH2 CH2 वाला आदत है, प्लीज उसको छोड़ दीजिए. Start making bond line structures. Start thinking in terms of bond line structure. It is going to save a lot of time.
ठीक है, टाइम की कमी है ना अभी, CS3 CS3 वाला खेल मत खेलिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से 1 दिन बैठिए, 1 घंटा दीजिए। इफ यू हैव एनी, अगर किसी को प्रॉब्लम है अभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, आई विल सेंड यू अ PDF। आई होप दैट PDF हैज हेल्प मेनी पीपल यहाँ पे। ठीक है, आई विल सेंड यू अ PDF, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए 1 दिन में। 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको आगे तक के लिए 1 महीने तक के लिए कम से कम आराम हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ईच कार्बन एटम्स, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसमें गलती करते हैं। व्हेन आई से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल ग्रुप जो होता है ना, व्हाट इज बेंजाइल ग्रुप? बेंजाइल ग्रुप इज बेंजीन रिंग एंड अ CH2 ग्रुप, और इसके बाद कुछ भी लगा हो। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? दिस इज बेंजाइल। प्लीज याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए बेंजाइल अल्कोहल, then you have this benzene ring, then you have the CH2, and then you have the OH. When you have benzyl halide, benzyl, let us say benzyl bromide, CH2Br. CH2Br। ठीक है, उसी तरह से एक विनाइल नाम का भी स्ट्रक्चर होता है। विनाइल का मतलब क्या होता है? यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज अटैच्ड विद समथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास विनाइल ब्रोमाइड हुआ, विनाइल अल्कोहल हुआ, देन दिस डबल बॉन्डेड CH विल बी अटैच्ड विद OH या Br या फिर Cl, कुछ इस तरह से। ठीक है, बेंजाइल याद करके जाइएगा प्लीज आप लोग। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा बेंजाइल में। एक और जनरल हम चीज बता देते हैं, इन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलवेज यू विल शो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर की तरफ एरो को मूव कराइएगा हमेशा। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव RX, ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड का क्लीवेज अगर दिखाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुअर कौन है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज होती है ना, तो यानी कि वो क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पुअर है, दैट इज व्हाई यू विल शो द क्लीवेज लाइक दिस। यू हैव R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। और अगर यहाँ पे हमने OH डाल दिया, तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? R पे, एंड देन दिस विल ब्रेक एंड देन यू विल हैव ROH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पुअर। एंड व्हेन यू हैव, if you have nucleophile, क्या होता है? Nucleophiles are electron rich, but what is different between nucleophile and base? Nucleophile और base में जो difference होता है, nucleophiles and base both are electron rich, तो structurally दोनों same होंगे, लेकिन दोनों का function अलग होगा। nucleophile is electron rich and makes bond with carbon। ठीक है, वो nucleus पे attack करेगा nucleophile। and what is base? base जो होता है, it is also electron rich and abstracts the hydrogen। बेस कहाँ अटैक करता है? हाइड्रोजन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन दोनों के बारे में। बेस एंड न्यूक्लियोफाइल दे आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्सो एक चीज और याद रखिए, टुमारो यू विल हैव क्लास। अब इसको रिवाइज कीजिए आप लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, जाइए रिवाइज कीजिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कुछ अगर आपके पास सवाल है तो सवाल को कीजिए। ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड हियर फ्यू थिंग्स। नॉमेनक्लेचर कम से कम प्रैक्टिस करके रखिए आप लोग, है ना। नॉमेनक्लेचर प्लीज प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि GOC ही की है। नेक्स्ट क्लास इज आल्सो GOC, इन दैट आई विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज हमने क्या कर लिया? आज हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो हमने क्या क्या मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया, तो हम सारे के सारे जो भी रिएक्शंस है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के, वो सारा करा देंगे। देन यू हैव ऑल द कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से जो भी सवाल होते हैं उनको करा देंगे। एसिडिक कैरेक्टर करा देंगे, बेसिक कैरेक्टर करा देंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो हम शायद बोलना भूल गए, एसिडिक कैरेक्टर में द pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो pKa क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सेम विद द pKb, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, pK एंड pKb के बारे में ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स वाले चैप्टर में हमने इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो प्लीज